Dear students, in this topic we shall discuss the pineal gland. This gland is a small reddish gray gland which is found on the dorsal surface of forebrain of vertebrates. Its shape resembles that of a pine cone, so it is named as pineal gland. Dear students, the pineal gland is actually a modified photoreceptor. In some amphibians and reptiles, it is associated with their third eye or parietal eye. So, it is linked to the light sensing organs and has photoreceptors in it. In birds and mammals, it contains light sensitive cells and has connections with the eyes. जो बर्ड्स और मैमल्स हैं इनमें थर्ड आई तो नहीं होती या पैरेटल आई मौजूद नहीं है, लेकिन पीनियल ग्लैंड का ताल्लुक आइज के साथ जरूर मेंटेन्ड है और इसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स भी मौजूद हैं. सो बिकॉज ऑफ presence of light sensitive cells in it, light controls its secretory activity. Dear students, the pineal gland produces a hormone which is called melatonin. This melatonin is synthesized from serotonin. Serotonin itself is synthesized from the amino acid tryptophan. इस तरह से अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन से सेरोटोनिन और सेरोटोनिन से मेलाटोनिन बनती है. Dear students, the hormone melatonin is involved in regulating the biorhythms in vertebrates. This hormone is produced due to uh, light sense of light effects on the pineal gland. As a result, melatonin is produced. So the production of melatonin is stimulated by darkness while it is inhibited by light. So it is secreted at night and its amount released depends on the length of the night. ज़्यादा लंबी रात होगी तो ज़्यादा मेलाटोनिन प्रोड्यूस होगा. During winter, when days are short and nights are long, more melatonin is secreted. Melatonin is involved in the regulation of many rhythmic activities related to light and dark periods and the seasons involving the length of day and night periods. Yes, students, the main target of melatonin is the suprachiasmatic nucleus in the hypothalamus. ये जो suprachiasmatic nucleus है hypothalamus का, it actually functions as a biological clock. टाइमिंग का तमाम हिसाब ये वाला hypothalamus का ये वाला हिस्सा रखता है. Melatonin actually decreases the activity of this part, or as a result this basic fact is related to the effect of melatonin in mediating biorhythms. Yes, students, now we shall discuss the role of melatonin in sleep wake up cycles. Birds और mammals इनमें बकायदा बड़े करेक्टरिस्टिक किस्म के स्लीप और वेक साइकिल्स होते हैं. इन साइकिल्स में मेलाटोनिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इट मॉड्यूलेट्स द ब्रेन स्टेम स्ट्रक्चर्स which govern the sleep wake up cycles. मेलाटोनिन की सिंथेसिस इंक्रीज होना शुरू हो जाती है जब लाइट डिक्रीज होती है और रात के पिछले पहर में अपनी पीक पर होती है. चाइल्डहुड में ये ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. एल्डर एज में इसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है. यही वजह है कि एल्डरली पीपल में जो स्लीप
साइकिल्स में डिस्टर्बेंसेस आती हैं और उनकी नींद कम हो जाती है, उसकी वजह लेस प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन होती है। Dear students, melatonin also regulates the seasonal fertility in many animals. Melatonin also causes a decrease in the production of gonadotropin releasing hormone from the hypothalamus and gonadotropic hormones from the pituitary. As a result, gonad activity of the gonads is inhibited. In many animals, gonads become involuted or shrink during certain seasons of the year. It commonly happens during the early winters when nights are longer. जब विंटर खत्म होने के करीब पहुंचता है और स्प्रिंग सीजन आने वाला होता है, तो एट दैट टाइम गोनेडोट्रोपिन्स की सिक्रीशन रिज्यूम होती है और इंक्रीज होती चली जाती है, क्योंकि मेलाटोनिन की सिक्रीशन कम होना शुरू होती है। As a result, animals and their gonads become prepared for springtime reproductive activity. Dear students, melatonin is also related to the sexual development in humans. In children, melatonin is produced in much larger quantities. This is considered as the reason that gonads do not develop in children and sexual development does not happen. जब प्यूबर्टी आ जाती है, उसके बाद मेलाटोनिन प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है। इन एडल्ट्स, melatonin is also involved in controlling sex drive and reproduction in humans.